Bismillahirrahmanirrahim. Today we will be talking about another important reaction in your carboxylic acids chapter, that is the Vohlard Zeilnsky reaction. It's also called as HVZ reaction. ये बहुत important reaction है, and most of the times you will see the question in your exams as well as in the competitive exams. So let's see. So ये जो reaction है, this is basically alpha halogenation of alkyl group. Carboxylic acids having alpha hydrogen. Carboxylic acids हम पढ़ रहे हैं those carboxylics which have alpha hydrogen. ये एक important condition है. Now those they react with the chlorine, or those carboxylic acids they react with bromine in presence of red phosphorus and sunlight or heat. So what they give or what they yield is substituted halo acids. Now example, what do you mean by this HVZ reaction? अब इस example से we can understand the HVZ reaction. This is a carboxylic acid called as propionic acid. Now this is carboxylic acid group. This is your alpha carbon. इस carboxylic acid की side में जो carbon है, this is alpha, and this is the beta hydrogen. HVZ reaction means substitution takes place at alpha carbon. Means ये जो दो hydrogen atoms है, they will get replaced by chlorine. When you react this with the chlorine in presence of red phosphorus, देखिए यहाँ पे एक hydrogen replaced by Cl, and the next step another hydrogen replaced by Cl. तो alpha hydrogen पे जितने आपके hydrogen atom होंगे, they will get replaced by the Cl. और अगर आपने यहाँ पे use किया bromine, then you will get here Br, दो Brs. So this is called as this acid is called alpha halo acid. So in the HVZ reaction, your product is alpha halo acid. So ये आपकी होगी definition. Now let us talk about the mechanism. ये बहुत important है. This HVZ reaction, it takes place in 3 steps. Step number 1, हम जो phosphorus use करते हैं, red phosphorus, हम जानते हैं phosphorus has many allotropic forms. White phosphorus, red phosphorus, यहाँ पे हम यूज करते हैं red phosphorus. तो red phosphorus को हम पहले रिएक्ट कराते हैं विथ क्लोरीन. अगर हमें क्लोरिनेशन करनी हो, यानी अगर हमें अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है बाय क्लोरीन, देन वी विल यूज Cl2. इफ यू हैव टू रिप्लेस दोज अल्फा हाइड्रोजन्स बाय ब्रोमीन, देन वी विल यूज दी Br2. So first step में this phosphorus reacts with chlorine to form PCl5, phosphorus pentachloride. ठीक, तो हो गया स्टेप नंबर 1. Now in this step number 2, ये जो ऊपर हमें बना PCl5, और we can also use PCl3, ये भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, सेकंड स्टेप में वो PCl5 it reacts with your carboxylic acid. देखिए ये आपका carboxylic acid है. कंडीशन है कि इस carboxylic acid में अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है. ठीक है, so what will happen in this step number 1? We know this OH negative, this OH in this step will get replaced by Cl from PCl5. तो यहाँ पे देखिए OH replaced by Cl, तो वो OH it reacts with this PCl4, it becomes POCl3, phosphorus oxychloride and HCl. तो in the step number 2, जो आपका parent carboxylic acid है which contains alpha hydrogen, इसमें जो OH है it gets replaced by Cl from PCl5. So this is our step number 2. So we are getting this is called as the acyl chloride. ठीक है ना, COCl, acyl chloride. Now in the final step, step number 3, जो आपका acyl chloride ऊपर बना, हम जानते हैं acyl chloride में it can exist in 2 forms. It shows tautomerism. Those acyls which have alpha hydrogen, they show tautomerism. अब यहाँ पे आपने ये पढ़ा होगा. I will just go back to step you back. This is your carbonyl. This is your carbonyl group, and then you have Cl here, or bromine, and then यहाँ पे अगर आपका कार्बन है which contains hydrogen atoms, I will just show one. Now this is called as the keto form. तो enol form कैसे होता है? This pi bond moves towards oxygen. Now this carbon gets plus charge, this carbon, to stabilize that this bond moves here. ये hydrogen जो है this moves towards this oxygen. So what you will get? You will get an enolic form.
So इस तरह के जो कंपाउंड्स है दे एग्जिस्ट इन बोथ कीटो फॉर्म एज वेल एज इनोलिक फॉर्म. ऐसे it becomes OH. So this is your OH. So this is your OH. You have a double bond here. So this is your enolic form. तो ये जो फॉर्म है एसाइल फॉर्म, इट कैन एग्जिस्ट इन कीटो फॉर्म एज वेल कैन एग्जिस्ट इनोलिक फॉर्म. तो यहीं पे ये बोल रहे हैं कि थर्ड स्टेप में जो एसाइल क्लोराइड है इट एग्जिस्ट इन द इनोलिक फॉर्म एंड दैट इनोलिक फॉर्म रिएक्ट्स रैपिडली that gets chlorinated or it reacts with the chlorine at the alpha carbon to form monochlorinated compound. To form the monochlorinated compound, and then which undergoes exchange with the unreacted carboxylic acid to give the product. देखिए इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. This was the product we obtained in the step number 2. Since it contains COCl, it's called acyl chloride. Now this is keto form, it gets converted to enolic form. ये देखिए OH आ गया यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड से हमने यहाँ पे समझाया था. Now this is your enolic form. ये जो इनोलिक फॉर्म है it reacts with the Cl, जो आपका Cl2 जो हम यूज करते हैं. It reacts with the Cl कैसे? This pi bond is here, so this pi bond attacks one Cl. This Cl gets broken down, तो ये Cl प्लस बनेगा, ये Cl नेगेटिव. यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे Cl नेगेटिव बाहर निकल रहा है, तो Cl प्लस यहाँ पे आ गया. इस कार्बन पे आपका बनता है प्लस चार्ज इस कार्बन पे बिकॉज Cl इज हियर. अब इस प्लस में क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है दिस ऑक्सीजन एटम दैट बेसिकली व्हाट इट डज. तो यहाँ पे आ गया आपका नाउ दिस हैज टेकन अ प्रोडक्ट. ये जो सॉरी यू कैन गो रिमूव व्हेन दिस अटैक्ड दिस Cl प्लस, तो इस कार्बन पे आपका ना एक तो Cl आ जाएगा इधर और इधर हाइड्रोजन, या ऐसे दिखा सकती हो ऊपर हाइड्रोजन नीचे Cl. सिर्फ ये जो बॉन्ड है, अब ये बॉन्ड दिस क्रिएट्स अ प्लस चार्ज हियर. तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, तो ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन की इट कम्स हियर, ठीक, टू मिनिमाइज दिस चार्ज. सो यू हैव दिस कंपाउंड वेयर यू हैव प्लस चार्ज ऑन दी ऑक्सीजन. नाउ ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद अ प्लस चार्ज, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया, नॉट स्टेबल. सो टू स्टेबलाइज दैट इट हैज वन वे दैट ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ दिस मूव्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दैट. सो ये आपका कंपाउंड बना, दिस इज व्हाट इज फॉर्म्ड. तो रिजल्ट देख लीजिए अब यहाँ से यहाँ तक, व्हाट इज द रिजल्ट आउटपुट, यहाँ से क्या बना, और आप आउटपुट यहाँ से देख लीजिए व्हाट हैज हैपेंड. कंपाउंड सेम है. ये जो अल्फा हाइड्रोजन है दीज आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द अल्फा कार्बन. One of the alpha hydrogens is getting replaced by Cl. इसी तरीके से ये जो रिएक्शन है इट कंटिन्यूज. आपके जो रिएक्शन वेसल है या जो भी जहाँ पे रिएक्शन करते हैं उसमें ऑटोमेटिकली क्लोरीन बहुत सारा प्रेजेंट है. सो नेक्स्ट स्टेप में ये दिस Cl विल आल्सो गेट रिप्लेस्ड बाय दिस हाइड्रोजन विल गेट रिप्लेस्ड बाय अनदर Cl. तो जितने आपके अल्फा हाइड्रोजन है दे विल कंटिन्यूसली गेट रिप्लेस्ड बाय द Cl. सो इट फॉर्म्स मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो एंड ट्राइक्लोरो एसाइल कंपाउंड्स. अब उसके बाद जो ये कंपाउंड बना हमें क्लोरिनेटेड, इट रिएक्ट्स विद दी कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल जो आपकी रिएक्शन वेसल में है. बिकॉज हमने क्या किया, हमने दिखाया इसको 3 स्टेप में. सेकंड स्टेप में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट किया इनटू एसाइल क्लोराइड, लेकिन देयर विल बी सम मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट. सो ये दो आपस में व्हाट दे विल एक्सचेंज, दिस इज OH पार्ट, दिस विल गेट एक्सचेंज्ड बाय द Cl. यानी ये जो OH है दैट OH विल कम हियर and this Cl will go here. So what is the result? Result is that we got our alpha chlorinated carboxylic acid and we got another molecule of acyl chloride. अब ये acyl chloride बन गया. Now this will move further. It will undergo alpha chlorination जिस तरह से यहाँ पे हमने किया, और ये this was our product alpha chlorinated acid. So जो हमने कहा था in the HVZ reaction जो आपका carboxylic acid है which contains alpha hydrogen, इस पे जो अल्फा हाइड्रोजन इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय दिस Cl, बाकी एसिड ऐसे के ऐसे रहेगा. सो दिस इज आवर प्रोडक्ट अल्फा क्लोरिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड. लाइकली यू विल गेट आल्सो समटाइम्स, अगर दो यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन इट कैन आल्सो बी रिप्लेस्ड बाय Cl, सो विल गेट डाइक्लोरिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो, डिपेंडिंग ऑन कितने रिप्लेस हो जाते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन जितने अल्फा हाइड्रोजन है दोज ऑल अल्फा हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड. सो दिस इज योर HVZ रिएक्शन. अगेन इट इज सिंपली दी
Now in HVZ reaction we have to remember that we must have a carboxylic acid with alpha hydrogen. If we react that with red phosphorus in presence of chlorine or red phosphorus in presence of bromine, ये जो alpha hydrogen atoms है, they will get replaced by chlorine or they will get replaced by the bromine depending on आपने क्या लिया यहाँ पे. So this is our product. It's called as alpha dichloro, क्योंकि दो replace हुए हैं, अगर एक ही replace हुआ होगा तो alpha chloro. So this is called as alpha halo acid. So the products of the HYZ reaction are alpha halo acids. In nutshell, so how can you define HVZ reaction? HVZ reaction, it occurs in those carboxylic acids which contain alpha hydrogen. In this case, when we react an alpha halo acid with the chlorine in presence of red phosphorus, all the hydrogen atoms at the alpha position, they get replaced by the Cl. इसी तरीके से if you have Br2 here, they will get replaced by bromine. So this is all about our HVZ reaction. ये बहुत important reaction है examination point of view से भी और competitive examination point of view से भी. So this is all about what we have today in this class. So if you have any questions regarding mechanism or any suggestions, you are free to ask the questions. इसके अलावा this note will be there as usual in the description link, तो आप इसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं एग्जाम के लिए. So thank you.